Hello students, I welcome you all in my YouTube channel. In this video, we will discuss about eating disorders in children. Already we had uploaded the part 1 video regarding eating disorders. This is part 2 video regarding eating disorders in children. Let's continue the video. So what do you mean by eating disorder? These are the psychological eating disorders in children. तो इसमें हम बात करेंगे मेनली एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा. एनोरेक्सिया का मतलब क्या है? लॉस ऑफ एपेटाइट. तो मेनली क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर क्या करेंगे, जो फीमेल है ना वो अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं, या जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट कम खाएंगे. ठीक है. बुलिमिया नर्वोसा के अंदर क्या होगा कि वो खा तो लेंगे ज़्यादा लेकिन उसको वापस निकाल देंगे, जैसे वॉमिटिंग कर दिया या कोई ड्रग ले ली जिससे क्या हो वो वापस निकल बाहर जाता है. तो दीज आर द टू ईटिंग डिसऑर्डर. वी विल डिस्कस वन बाय वन ईच सेपरेटली. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एनोरेक्सिया नर्वोसा. Anorexia term it is coined by William Gull. Anorexia means lack of eating or lack of appetite. It is an eating disorder in which the child is having immoderate food restriction, inappropriate food habits or rituals, obsession with a thin figure, fear of weight gain and fear of distorted self perception. Mainly females के अंदर क्या होता है, जैसे प्यूबर्टी की एज आती है ना, तो वो क्या सोचती है कि मेरा फिगर खराब नहीं होना चाहिए, तो दे स्टार्टेड टू ईट लेस. तो खाना कम खाएंगी, उनको क्या लगेगा मेरा थिन फिगर होना चाहिए, मोटी लड़कियां अच्छी नहीं लगती, तो वो क्या करेंगी खाना कम खाएंगे, जिसकी वजह से उनको अदर हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा. एनोरेक्सिया नर्वोसा टू टाइप्स का है, पर्जिंग टाइप एंड रिस्ट्रिक्टिंग टाइप. पर्जिंग का मतलब क्या है कि वेट लॉस चाइल्ड अचीव करेगा बाय वोमिटिंग, लग्जेटिव एंड डायूरेटिक्स. वोमिटिंग कर देगा, जैसे खाना खा लिया उसके बाद क्या होगा वोमिट आउट कर देगा जितना भी फूड खाया है, तो उससे क्या होगा चाइल्ड का जो वेट है वो गेन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू एज, हेल्थ एंड सेक्स. लग्जेटिव्स क्या करती है, स्टूल सोफनर का काम करती है, और जैसे ही चाइल्ड ने खाना खाया लग्जेटिव्स ले लिया तो जितना भी खाना खाया वो सारा स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाएगा. डायूरेटिक्स विद द हेल्प ऑफ यूरिन द चाइल्ड इज removing the weight and maintaining weight loss. In restricting type, the child is restricting towards the food. Either the child is restricting the calories by following diet pattern, by doing fasting or excessive exercise. So restricting type of nervosa, it is anorexia nervosa, and purging type is bulimia nervosa. Now we will discuss the causes of anorexia nervosa. There are some factors that included for anorexia nervosa and bulimia nervosa. The causes they are same. For some are the psychological factor, interpersonal factor, biological, social and cultural factor. In psychological factor, what will happen if the child is having anorexia nervosa? There is low self-esteem, or the person who is having low self-esteem regarding the body image, they may have anorexia nervosa. Feeling of inadequacy, response to change of puberty, response to stress and personal illness. In interpersonal, if there is troubled family and personal relationship, difficulty in expressing emotions and the feelings, and history of any physical or sexual abuse. In biological factor, there may be genetic or family history of anorexia nervosa. Social and cultural factors. Cultural factors में क्या होता है, बहुत सारे cultural factors की जो thin female है, they are looking good. That is a perfect body image, so they have to maintain the thin figure. For that the girls they are falling into the anorexia nervosa habit. Physical appearance matter, not inner qualities and strength. So some of the cultures they are telling that the physical appearance it is more important rather than the inner qualities and the strength. So they have to maintain the body weight and the thin figure. That's why they are falling into the anorexia nervosa disease. Now we will discuss what are the symptoms of anorexia nervosa. There is amenorrhea, fatigue, weakness, anemia, infertility, cold intolerance, palpitation, dizziness, abdominal pain, bloating, early satiety, constipation, swelling to feet, irritability. These are the medical signs. And the physical signs is low body mass index, that is less than 17.5 kg per meter square, emaciation, that is body weight is less than 70% of ideal body weight, hypothermia will be there, bradycardia,
hypotension, hypoactive bowel sound, cirrhosis, that is dry scaly skin due to dehydration as the person is taking laxatives, diuretics and vomiting is doing. Brittle hair and hair loss due to malnutrition or nutritional habits. Now we will discuss what all lab assessment that should be performed if a person is having anorexia nervosa. Serum electrolyte, blood urea nitrogen test, serum creatinine, CBC, LFT, RFT, KFT, serum aspartate, alanine aspartate, serum transferase enzyme, alkaline phosphatase, serum albumin level, glucose, serum calcium phosphate, magnesium, INR, CBC, TSH, vitamin D, ECG, urine analysis, X-ray, all these lab investigation to be performed. Because when the person is not taking healthy diet or restricting the diet, तो क्या होगा, पर्सन के हर सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा. सो लैब इन्वेस्टिगेशन इट्स इंक्लूड. Now we will discuss the nutritional part of anorexia nervosa. So the treatment part of anorexia nervosa, it includes nutritional rehabilitation, psychotherapy and pharmacotherapy. न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन में हम क्या करेंगे, सुपरवाइज्ड मील देंगे, प्रिस्क्राइबिंग बिंज ईटिंग एंड पर्जिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. डाइट के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैलोरी एंड इसेंशियल अमीनो एसिड टू बी गिवन. साइकोथेरेपी हम क्यों देते हैं, टू डील विद द प्रॉब्लम्स दैट दे आर हैविंग विद द लिविंग सो दैट दे कैन कोप अप विद दैट स्ट्रेस. इसके अंदर हम देंगे उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, स्पेशलिस्ट स्पोर्टिव क्लिनिकल मैनेजमेंट थेरेपी, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, फैमिली थेरेपी, मेंटेनेंस साइकोथेरेपी शुड बी कंटिन्यूड. And in pharmacotherapy, olanzapine, lorazepam and SSRI can be given. Antidepressants, these are SSRI. And antipsychotic drugs, mood stabilizer and anxiolytics can be given to the child. So this was related with anorexia nervosa. Now we will be discussing about bulimia nervosa. bulimia एक ग्रीक वर्ड से आया है, that is bulimia. bulimia का मतलब क्या है, रेवेंजनस हंगर, कि जो चाइल्ड है वो काफ़ी हंगरी होगा, तो हंगरी होने की वजह से क्या होगा, वो खा लेगा बहुत ज़्यादा, तो खाने की वजह से क्या होगा, उसका वेट गेन होगा. अब उसका अपने फिगर का डर है, फिगर जो सेल्फ परसेप्शन है बॉडी इमेज का है उसको डर है, तो वो क्या करेगा, उसको पर्ज आउट कर देगा. पर्ज आउट कैसे करेगा उसको, बाय वोमिटिंग, बाय टेकिंग laxatives and diuretics. Bulimia nervosa, it means disease of hunger affecting mainly nervous system. It is an eating disorder that is marked by binge eating, that is out of control eating followed by purging such as vomiting, taking laxatives and excessive activity to prevent the individual from gaining weight. बिंज ईटिंग साइकिल के अंदर क्या है कि जो चाइल्ड है वो स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर रहा है, अब उसको क्या लगी, टेंशन और क्रेविंग हो रही है फूड की, तो वो क्या करेगा, बिंज ईटिंग कर ली उसने. बिंज ईटिंग को अवॉइड करने के लिए वो क्या करेगा, पर्ज करेगा ताकि उसका वेट गेन ना हो. फिर उसको लगेगा कि उसने गलत खा लिया तो उसको शेम एंड डिस्गस्ट आएगा. सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर. The signs and symptoms of bulimia nervosa and anorexia nervosa, they are same. Age of onset of bulimia nervosa or anorexia nervosa, it is 13 to 20 year of age. Mainly females के अंदर 9:1, females में 9 times more common than male. What is the treatment? Psychotherapy, medication, nutritional education and hospitalization. Psychotherapy में already we had discussed, the treatment is same. Cognitive behavior therapy, psychodynamic psychotherapy, interpersonal behavior therapy and family based technique. According to the course we will treat. Medications में antidepressants they are given, that is fluoxetine, SSRI. Anticonvulsant and tricyclics, imipramine can be given. Nutritional education to be given to achieve healthy weight and good eating plan. Hospitalization, it is less frequent if the child is having severe weight gain or severe weight loss. If the child is having severe weight loss or excessive vomiting, hospitalization may be needed for the child. So this was related with eating disorders in children. Thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.